उनमें उनका जो साइज जो है उनमें जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है, एंड दिस is termed as minimal change because the negativity has disappeared. वो negativity neutralize हो जाती है because of specific type of cytokines produced within this body of this particular patient. तो वो cytokines क्या है, ये negative charge को neutralize कर देते हैं. अब अगर negative charge को neutralize करेंगे, albumin का size बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो वो इसलिए पास नहीं कर पाता because there is a negativity, और albumin भी negative है, तो negative repel करता था. अब ये साइटोकाइन की वजह से नेगेटिविटी एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैज रिड्यूस्ड. अगर वो कैपिलरी में नेगेटिविटी रिड्यूस होगा तो एल्बुमिन इजीली पास हो सकता है. सो द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेवी एल्बुमिन यूरिया. सो दिस इज अ सिलेक्टिव टाइप ऑफ प्रोटीन यूरिया डिजीज. Fine. I am telling you the applied aspect also related to this particular part of the renal system, and this is very interesting because many times you might have heard presently even in the COVID patient कि renal failure, respiratory failure हो गया जिस कारण से renal failure हो गया. Now renal failure क्यों हो रहा है? Because respiratory failure की वजह से hypoxia होता है. Hypoxia की वजह से renal को जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा रहा है, तो फिल्ट्रेशन कम होता है. फिल्ट्रेशन कम होगा तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा. दैट मीन्स चूंकि फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द वेस्ट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड, राइट? नाउ वेस्ट एक्यूमुलेशन इन द ब्लड इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, so it will lead to multi-organ failure. Fine. Okay, let's move ahead. Now coming to the cells which are termed as mesangial cells. These are the cells which are present within the glomerular capsule. They are derived from the blood monocytes. They are basically the component of the mononuclear phagocytic system, जिसको हम reticular activating system बोलते हैं, reticular system of the body बोलते हैं. And they are present in the mesangium. Mesangium means interstitial part of the glomerular duct. Now, what is the function of this particular type of the cell which is present in the Bowman's capsule? Firstly, they provide the structural support. That's the most important function of it. The second, it secretes extracellular matrix. It secretes proteoglycans and cytokines. It has contractile units. It has certain contractile cells within it which affect the glomerular area. अगर कैपिलरी सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, अगर कैपिलरी सरफेस एरिया कम हो जाता है तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम हो जाती है. तो एंटीजन एंटीबॉडी complex is being reduced. It also has the capability of proliferation. That means it has the capability to secrete or produce collagenous components. The other very important aspect of this particular mesangial cell is that it has it contains receptors for angiotensin II. It's very important. Glomerular component which are present, they are termed as extraglomerular mesangial cells, or they are also termed as Lasek cells, right? There's another name I'm not able to pronounce. It's German or Russian name, I'm sorry.